Hello everyone, welcome to Zine Rocks, a channel of education, entertainment and lots of tricks and ideas. Today's topic is microeconomics versus macroeconomics. One side is micro, the other side is macro. Micro, small, macro, large. Microeconomics, the word micro is derived from the Greek word micros, which means small. Macroeconomics, the word macro is derived from the Greek word macros, which means large. As we have studied microeconomics in my previous video, we have seen that microeconomics is the study of an individual unit. According to Morris Job, microeconomics is in fact a microscopic study of the economy. But let's talk about macro. Professor McConnell once said that macroeconomics is study of the forest, not the trees. आसान सी भाषा में माइक्रोइकोनॉमिक्स में हम एक एक चीज को इन डेप्थ स्टडी करते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सारी चीजों को एक साथ ऊपर से स्टडी करते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स ये पूरे इकोनॉमी का स्टडी है. माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी के एक छोटे से पार्ट का स्टडी है. मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है टोटल इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स की, जैसे कि देश का इनकम, नेशनल इनकम, जैसे कि देश का खर्चा, एग्रीगेट कंजम्पशन, जैसे कि देश का सेविंग्स, एग्रीगेट सेविंग्स. Distinguish between microeconomics and macroeconomics. Point number one. Always remember that point number one always has to be the meaning of the concept. For example, point number one, microeconomics. Microeconomics refers to that branch of economics which studies the individual units in detail. Whereas point number one, macroeconomics. Macroeconomics refers to that branch of economics which studies the economy as a whole instead of studying individual units. Point number two, microeconomics studies individual units like individual firms, individual households, individual income, prices, wages, etc. in detail. On the other hand, point number two of macroeconomics, macroeconomics studies the aggregate concepts. Aggregate means totality. Aggregate concepts like aggregate consumption, aggregate demand, aggregate savings, national income, etc. Point number three, microeconomics uses slicing method for analysis. Macroeconomics on the other hand uses lumping method for analysis. आसान सी भाषा में माइक्रोइकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमी को स्लाइस करके, डिवाइड करके पार्ट्स में एक एक पार्ट को डिटेल में स्टडी करता है. मैक्रो इकोनॉमिक्स लंप करता है. लंप करना मतलब सारे छोटे छोटे पार्ट को जमा करना और फिर सारे पार्ट्स का एक साथ स्टडी करना मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है. पॉइंट नंबर 4, माइक्रोइकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्राइस थ्योरी. मैक्रोइकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज अ थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम. आसान सी भाषा में माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी बोलते हैं. हर एक चीज का प्राइस, हर एक फैक्टर का प्राइस निकालना होता है तो तुम्हें डिटेल में स्टडी करनी जरूरी है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज करना पड़ता है. यहां पे पूरे देश की बात हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट और इनकम ये पूरे देश के टॉपिक्स है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज अ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. पॉइंट नंबर 5, simplest one, the scope of microeconomics is limited, the scope of macroeconomics is wide. You can also write scope of microeconomics is narrow, scope of macroeconomics is wide. Microeconomics uses a partial equilibrium analysis, macroeconomics uses a general equilibrium analysis. Microeconomics partial equilibrium analysis use करता है, means part is considered, other things remain constant. It does not look into the economy as a whole, it considers only the part of the economy, other things being constant. Whereas macroeconomics बात करता है general equilibrium की. General equilibrium में every economic variable is depending on other variable. Interdependence of variables is present in macroeconomics. Example देता हूं, देश का अगर इनकम बढ़ता है तो देश का खर्चा भी बढ़ता है,
देश का सेविंग्स भी बढ़ता है, देश का कैपिटल भी बढ़ता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन assumptions, that is why it is unrealistic, whereas macroeconomics is not unrealistic, it is realistic. Hope you all have understood the difference between microeconomics and macroeconomics. If you by heart the features of microeconomics properly, this distinguish will be very simple, and this is a very important question from your exam point of view. Thank you. Shahid Neman signing off.